यार बार साल का सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग महीना आ गया, जनवरी। क्यों भाई? जनवरी ने ऐसा तो क्या बिगाड़ दिया है तेरा? तू खुद ही सोच यार, हर साल साल के पहले महीने में वही रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल बॉडी बन जाएगी, इस साल ये हो जाएगा, न्यू ईयर न्यू मी एंड सेम शिट। 2024 में हो जाएगा, जिम के पैसे भी भर दिए बट कुछ हुआ। वही साल के थर्ड वीक में ही सब रिजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं यार। मुझे भी यही लग रहा है। 2 वीक तक लगातार जिम करते हैं, फिर थर्ड वीक में किसी का बर्थडे आ जाता है। अरे यार, तो ये थर्ड वीक में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा है। मुझे लग ही रहा है भाई, 2 हफ्ते तक जिम करते भाई ये नहीं हो रहा है यार। भयंकर गड़बड़ जनवरी के थर्ड वीक में नहीं, तुम्हारे ट्रांसफॉर्म करने के मेथड में है। सोशल मीडिया स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज फुल ऑफ क्रेजी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस। दे ऑलमोस्ट लुक इम्पॉसिबल टू अस एंड इनको देख के आवर फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड इज मैं भी कर लूंगा। ओके, द सेकंड थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड इज कुछ तो क्रेजी सीक्रेट है इन लोग पे जो उधर पहुंच नहीं रहा है। करेक्ट। हमें लगता है कि उनके ट्रेनर या डाइटिशियन उनको कोई क्रेजी जादू टोना वाला पोषण देते हैं या कोई क्रेजी वर्कआउट्स कराते हैं या फिर कोई मैजिकल डाइट देते हैं जो हमें और आपको नहीं पता। एंड व्हाट इफ आई टेल यू दैट अगले 5 मिनट में आई एम गोना गिव अवे ऑल ऑफ देयर सीक्रेट्स। सो भले फरवरी से सही, you can still make 2024 your year and achieve your dream body. Ready to hear the secrets? Come closer. There are no secrets. But there are 5 simple steps that you can follow to get these kind of results. First, you must create a calorie deficit. Your body needs energy. आपको काम के लिए एनर्जी चाहिए, वर्कआउट्स के लिए एनर्जी चाहिए, अपने व्हीकल तक चल के जाने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एनर्जी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से लड़ाई में जीतने के लिए एनर्जी चाहिए। अब जो एनर्जी आपको खाने से मिल रही थी, वो एनर्जी जब खत्म हो जाता है, that is when your body switches to burning body fat. A very simple way to think about this. Let's say your body burns 2000 calories per day. So you use 1500 calories from food, and बाकी के 500 कहाँ से आए? Simple answer, your body fat. And magic, fat loss happens. And ये प्रोसेस को कहते हैं कैलोरी डेफिसिट में रहना। Basically, you have to eat less than what you burn, or you have to burn more than what you eat. So to achieve a calorie deficit, control the calories you eat and increase the amount of calories you burn by being more active throughout the day. Which brings us to our second point. Be more active throughout the day. While your 1 hour of workout is extremely important, it is not when you burn most of your calories in the day. Shocked? Let me show you some facts on where we actually burn most of our calories. 70% of the calories you burn in the day comes from your BMR, your basal metabolic rate, which in simple language is the amount of energy you need to keep your body alive. Only 5 to 10% of your total calories burned are from your 1 hour of exercise. And अगर आप पिंटू हो जो जिम में एक्सरसाइज स्किप करता है, तो फिर तो not even 5%. Now, around 15 to 20% comes from your activity outside the gym, which includes you fidgeting, walking while talking on the phone, doing your groceries, घर का काम, and most importantly, your fingers doing the dance when you don't know what to text. And this right here is going to be your game changer. The third step is you need to do some weight training. Weight training, unlike the reputation that it gets, is not just for bodybuilders. To look like a bodybuilder, you need to train for hours, and I'm sure you don't have the time for it. An hour of weight training done at least thrice a week is a great way to make sure कि आप खाली फैट लूज कर रहे हो, मसल लूज नहीं कर रहे हो। जो शेप और टोन की लड़के और लड़कियां बात करती है, that shape is nothing but muscles on your body, and you need weight training to build them. फिर आया Alpino का favorite point, have enough protein. वेट ट्रेनिंग से आप अपने मसल्स को यूज तो कर लोगे, बट उसको बिल्ड करने के लिए चाहिए बॉडी में इनफ प्रोटीन. To know more about what kind of protein to eat and how much to eat, watch this video. And the last one of them all, ये वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट and which is the most difficult thing for you guys to follow is follow those steps for a minimum of 3 to 4 months. A transformation, more than anything, is a very slow game of patience. So keep that in mind and win it. These are the very basics of what your transformation process should start out with. इसके अलावा भी there are a lot of mistakes that you may make in your transformation, and we are covering that in the next videos. So stay tuned.